Right, this is the beautiful view of the National Bank Stadium, Karachi, where match 5 of this all-important series of the Pakistan and South African women under-19 teams is about to take place. And this final match has become very important because both of the sides have won 2 matches apiece, and that has made this series more spicy. The umpires say it's play, first slip in place, and we are all set for the first ball of the decider. They're doing something different. This is not required, unlike South Africa. Just giving an easy single to get Pakistan on their way. Hits it in the air and gets it in the gap. Fielder is trying her best, but she'll eventually give up. Confident start for Ravel. First boundary for the Pakistani girls. Now she goes across the line and gets it over mid-wicket. The outfield is really quick here at National Stadium, and you'll get all the value for these shots. Another boundary for Ravel. Nicely squatted that one past cover. This will run away for 4, and that will give a huge confidence to Komal. Swinging that one across the line. There's big gap available on the leg side. This might just go and touch the fence, and it does. Now she goes aerial. This time connection is much better than the previous one. Couple of bounces and into the fence she goes. Now she gets it through. Couple of fielders were getting really close to each other. And this might be... no, yeah, brilliant effort, but still the ball pushed further away from her. बहुत ही शानदार अंदाज से लीड कट किया कोमल ने और 4 रन हासिल किए. खुशी दिखाई दी डग आउट में. और इस बार ओवर पिच गेंद को ऑन साइड की जानिब जोरदार हिट किया. अंपायर का सिग्नल देखना होगा. फील्डर ने तो सिग्नल दे दिया. छक्का. बहुत ही जबरदस्त सिक्सर लगाया है यहाँ पर. खासी लूज बॉल की थी यहाँ पर ऑन साइड की जानिब और बहुत ही खूबसूरती से गाइड किया. गैप में गाइड किया सॉफ्ट हैंड के साथ. स्क्वायर लेग पर 4 रन हासिल किए यहाँ. और ये क्राउड एंजॉय करता हो. और ये देखना होगा. बहुत ही जोरदार अपील. और ये पहला नुकसान कोमल की सूरत में पाकिस्तान वुमेन्स अंडर 19 को उठाना पड़ा. शफल करके थोड़ा सा विकेट के सामने आ गई थी और लेफ्ट आर्म स्पिनर का ये गेंद ड्रिफ्ट होके अंदर की जानिब आया. पाकिस्तान को पहला नुकसान कोमल की सूरत में उठाना पड़ा. कोमल खान 21 रन बनाकर आउट हुई. 20 गेंदों का सामना किया. मेलिसा ने एलबीडब्ल्यू किया उन्हें. मेलिसा की इस गेंद को सामने की जानिब शहर बानो ने हिट किया और 6 रन हासिल किए. जबरदस्त हिट यहाँ शहर बानो की. ओवर पिच गेंद थी जिसे लॉन्ग ऑफ की जाने प्रॉपर टाइम करके हिट किया और 6 रन हासिल किए. फिर ओवर पिच बॉल मिली और फिर हिट किया यहाँ शहर बानो ने और फिर सेम रिजल्ट. एक और जोरदार सिक्सर शहर बानो के बैट से और ये खुशियां डग आउट में. मैच में ऑफ स्टंप की तरफ है, लेकिन ये गेंद थोड़ा मिडिल और लेग स्टंप पे थी, जिसका भरपूर फायदा उठाया और 6 रन हासिल किए. इस ओवर में 2 छक्के लगा लिए हैं और फिर ओवर पिच गेंद और इस मर्तबा फिर गैप हासिल करने में कामयाब शहर बानो. यू ब्यूटी. She goes for the big shot. It's up in the air. 2 fielders converge, but they will be just a mere spectator as Sheher Bano once again clears the fence and gets the maximum out of it. To take those, look at that, the cracking sound of the willow, and she knew when she struck that it is going to sail over for a majestic 6. Goes again. 2 fielders trying their level best to get as closer as possible, but the ball will just fall in front of them. Down the wicket she comes, and was she able to take the bails off in time? Nothing wrong with the front foot there, and that swing allowed her to just place that bat inside, and the wicketkeeper did take some time before she could first settle herself and then take the bails off, and that allowed Sheher Bano to return to the crease.
Nicely driven. Some work to be done by Mia Lelor, but I think she does a really good job there. Might have done a bit of damage to her knee. Stopped a certain boundary. Have a look at that. Just in time. Oh, was she in contact when she was able to pull the ball in play? This is going to be interesting to watch. Yep, really interesting because she pushed the ball back with her right hand, and now you could see the ball might have been in contact with her hand when her... And the confirmation comes. It's a boundary. 5-match T20 International Series. Lovely delivery. Now this time the wicketkeeper looks really confident. Foot in the air. Or were the toes on the ground? This angle will give us a much clearer view of what unfolded. The decision which is still pending, but now it comes out and it's not a good one for the home team. You could sense that her foot was slightly in the air when the wicketkeeper took the bails off, and that's why she was very confident and she started celebrating with her teammates. And a cameo comes to an end from Sheher Bano. Exactly the sort of an innings that the Pakistani team wanted when she was promoted up the order at number 3. 30 of just 19 deliveries for the all-rounder tonight, as Pakistani girls have now lost their second wicket. Oh, this time it's Ravel who decides to go big. Another opportunity for the South African girls, and they take it, accepting it with both hands. 2 wickets now in quick succession, and captain is all over the moon. Irresponsible batting, I should say, because there wasn't a need of this particular shot. One would say that this was her favorite shot, but in the end she has lost her wicket playing her favorite stroke. Made 32 of 34 deliveries. Gets it straight and gets it through. But long gone will have to do some chasing. She does well. And they get back for a couple. Got that away in the gap. More work to be done by that fielder at deep backward square. Another couple there for Aksa. Nice swing of the bat. There is no one out there. Good shot selection this from Zulfisha. Much needed boundary for Pakistan. इस बार बड़ी हिट मारने की कोशिश, फील्डर गेंद के नीचे, कैच ड्रॉप हुआ यहां पर इस दौरान में 1 रन, और क्या 1 रन ही हासिल किया है, तो ये तो बहुत ही खराब रनिंग बिटवीन द विकेट है मंजर। कदमों का इस्तेमाल किया यहां ज़ूफिशा ने, जोरदार हिट मारने की कोशिश और उसमें पूरी तरह कामयाब रही ज़ूफिशा। जोरदार छक्का ज़ूफिशा का, और पूरी तरह से गेंद को तकरीबन गोल्फ शॉट के अंदाज में ये छक्का लगाया उन्होंने, गेंद बिल्कुल सीधा। एक और ओवर पिच गेंद थी, एक और जोरदार हिट मारने की कोशिश, आउट होने का खतरा। यूं ज़ूफिशा की इनिंग का खात्मा हुआ। वैन विक की इस गेंद पर एक आसान कैच लेके उनकी इनिंग का खात्मा किया। बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट हासिल करने में कामयाब हुई क्रूशल मौके पे साउथ अफ्रीका अंडर 19 टीम। वेल जज कैच बाय फील्डर। आखिरी ओवर्स में ज़ूफिशा से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वाबस्ता थी, क्योंकि लास्ट मैच में उन्होंने बड़ी बरकरफ्तार इनिंग खेल के पाकिस्तान को फतह दिलाई थी, लेकिन इस बार हर मैच में रन नहीं होते। ज़ूफिशा याज 18 रन बनाकर आउट हुई 17 बॉल पर। मारी ने कैच लिया एंड वैन विक ये विकेट हासिल करने में कामयाब। इस बार ओवर पिच गेंद थी, सामने की जानिब हिट मारने की कोशिश की, फील्डर मिड ऑन के अंदर थी, इसी वजह से फायदा हुआ। 4 रन हासिल हुए पाकिस्तान वुमेन्स अंडर 19 को। ऑन साइड की जानिब खेला, 1 रन दौड़ के हासिल किया। गैप में शॉट है, बड़ी आसानी से दोनों बैटर्स 2 रन हासिल करने में कामयाब होंगी। वो ऑटोमेटिक जो है वो हेल्प आउट हुआ है। और अगर हम फील्डिंग ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका हम जिक्र करते हैं, तो उसमें आपकी फिटनेस और आपकी डाइट ज़्यादा रोल प्ले करती है। पहले ज़ूफिशा और उसके बाद फिजा भी बड़ी हिट मारने गई थी, लेकिन बहुत ही अच्छा कैच लिया मिड ऑफ पर, और इस तरीके से पाकिस्तानी कैप्टन की इनिंग का खात्मा हुआ। कैप्टन
पहली ही गेंद खेलने गई थी और आउट हो गई। इस बार ऑन साइड लॉन्ग ऑन की जाने बड़ी हिट मारने की कोशिश, लेकिन सीधा फील्डर को कैच थमा दिया। यहाँ डैनिली ने एक और कामयाबी दिलाई यहाँ साउथ अफ्रीका अंडर 19 को, लेकिन वो शॉट नहीं खेल सकी जो वो चाहती थी और बाउंड्री लाइन से थोड़ा अंदर एक आसान कैच, वेल जज कैच हासिल किया। और इस बार ऑन साइड की जाने फ्लिक करने में कामयाब हुई, जिसका बहुत देर से इंतजार था। वो छक्का हासिल हुआ यहाँ पाकिस्तान वुमेन्स अंडर 19 को। और अक्सर इस तरीके के 1 या 2 स्ट्रोक और दरकार होंगे इस वक्त, जहां पाकिस्तान टीम का मोमेंटम है। गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर, अच्छा स्ट्रोक खेला, टाइमिंग अच्छी थी। 4 रन हासिल हुए फर्स्ट बाउंस के बाद, गेंद बाहर गई और इस बार शफल करके गई थी ऑफ स्टंप के बाहर। बड़ी हिट मारने की कोशिश, एक आसान कैच ड्रॉप हुआ। इस दौरान में दौड़ के दोनों बैटर्स ने 2 रन हासिल किए। आखिरी बॉल पर सामने की जाने हिट मारने की कोशिश और इस पे कैच ड्रॉप हुआ। ये यहां पर कॉटन बोल्ट का चांस था, लेकिन दौड़ के दोनों प्लेयर्स ने 1 रन जरूर हासिल किया। पाकिस्तान विमेंस टीम आखिरी 2 ओवर बहुत अच्छे नहीं खेल सकी, लेकिन इसके बावजूद 128 रन बोर्ड पर सजाने में कामयाब हुई। 129 रन का हदफ होगा साउथ अफ्रीका विमेंस अंडर 19 के लिए। 129 runs is the target from 120 deliveries for the South African girls to win this series, as their both opening batters are jumping their way to the crease. So the umpire says it's play. Left arm seamer to start the proceedings. Straight away a bit of shape into the right hander for Zabe. He goes aerial and just gets it over mid-on. This will be the first boundary of the South African innings, and a confident start this from Rensburg. He's going to throw her bat at it. Look at that. It was way too short for her, and she didn't waste an iota to put that away for a boundary. Much more fuller. That's the length she should be after, and a direct hit was needed. It didn't hit the stumps, but it did hit Mahanur Zabe. And he was away from cricket for 4 weeks. Doesn't seem to be the case here. Hoping against hope that this is not going to be that serious for Pakistan. She was down and was making murmurs in pain. Just angling down the leg side, but this is good line and length from Mahanur. Slightly fortunate. An inside edge will bring her a single. 7 runs in the opening over. The visitors are 7 for none. Tries to go over the top, and she gets it over mid-off, does Mia. Good boundary for Mia Lelor. Off the back foot, in the air, in the gap. This might run away for 4 as well. Expensive over this from Rosina. Scores that one and gets that in the gap. Protection in the deep, but to no avail. Boundary to start the over. That's one way to welcome the new bowler. Have a look at that. Once she got it past that diving fielder at gully, there was no chance for the fielder at the boundary. The ball just races away here in Karachi. Straight over the umpire's head. Long on his back, and I'm pretty sure she's going to cut that one off. Bit of a fumble, but Rensburg will come back for a couple. Swings that one away. Gets it over the fielders on the leg side. Another boundary this for Rensburg. Careful with the discipline. Look at that. It was too straight, the line, and length was also there for the taking. She goes again. It's in the air. Long on is coming around, but the ball just falls in front of her. Sheher Bano recovers as Mia picks up a couple. Outside edge, and very lucky. There was no one in the slip cordon. It's going fine. Short third will cover that one off. Maham Sadakat chasing it all the way down to the boundary ropes.
Inside edge. It's gone fine. Fine leg was up, giving all the chase. Maham does a really good job. Pretty sure she has managed to pull it back. And a couple nevertheless for Rensburg. ये इस्तेमाल किया अब तक और ये पावर प्ले का ही फायदा उठाया. फील्ड सर्कल में थी और मिड विकेट की जानिब जबरदस्त स्ट्रोक. 4 रन हासिल हुए. यहाँ साउथ अफ्रीका अंडर 19 टीम इस वक्त थोड़ी सी ज्यादा मैच पे ग्रिप रखे हुए हैं इन दोनों ओपनर्स की वजह से. ये देखें मंजर जी, उम्दा स्ट्रोक खेला. आगे गिरी बॉल थी उसको, क्योंकि उनको पता था कि पावर प्ले है. एंड साउथ अफ्रीका वुमेन्स अंडर 19 टीम. और ये हल्की हल्की फुहार मैदान में आती हुई दिखाई दे रही है. और इस बार ये मिसफील्ड यहाँ पर की. ये रन हमारी बैटर्स नहीं ले रही थी मंजर. ये लर्निंग प्रोसेस जरूर है. जी बिल्कुल, यही वो पॉइंट था जिस पे मैं बात भी कर रहा था कि अगर आप स्ट्रोक नहीं खेल पा रहे तो आप कम से कम अपनी रनिंग बेहतर करें. मंजर यहाँ पे बारिश की वजह से खेल रुक गया. पहली मरतबा सीरीज में ऐसा हुआ. और ये फाइनल मैच है. यहाँ पर डीएल मेथड अगर अप्लाई हुआ, अब तक वैसे इतनी ज्यादा बारिश कराची में हुई नहीं है, तो फिर साउथ अफ्रीका फर्म फेवरेट दिखाई दे रही है इस मैच में. लेकिन अभी 6 ओवर मुकम्मल नहीं हुए, तो इस मैच में अभी बहुत कुछ बाकी है. स्टे ट्यून. ये मुकाबला फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट का, साउथ अफ्रीका क्रिकेट का. और इन बच्चियों ने अब थोड़े दिन के बाद वर्ल्ड कप खेलना है. तकरीबन सिमिलर कंडीशंस होंगी. ये फाइनल मैच दोनों टीमों की तैयारियों के लिए बड़ा ही अहम है. Welcome back for the one last time in the National Bank Stadium, Karachi, where the University of Lahore presents revanche. Pakistan versus South Africa under 19 women's series is going on, and a little while ago it has been a heavy rain. It was pouring down. Yeah, one can say that it's a rainy season across the country, but it's not very often you come across that much rain, especially in Karachi. But this is how it worked, and because of the Duckworth-Lewis, due to the stoppage in the play, South African women under 19 won the contest, the final match, I would say, by 17 runs, and they have the series